Hello students. In last video I explained you importance of business organization and today topic is organizational structures. Organizational structures means a network of job, positions, responsibilities and authority at different levels of organization. Student structures network of job positions या responsibility and authority at different levels of organization are called organizational structures. These structures shows the authority responsibility relationship between the people working at different job positions, and these structures makes clear who is reporting to whom, or who is the boss and who is the subordinate. Second is span of management. Span of management means how many employees can be managed efficiently by one manager और वन सुपीरियर मीन्स कि एक सुपीरियर यानी कि एक बॉस हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ को यानी कि कितने एम्प्लॉयज़ को एफिशिएंटली मैनेज कर सकता है, तो देन इट इज़ कॉल्ड स्पान ऑफ मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स. फर्स्ट पॉइंट, organizational structures organizes properly all the operations of business and ensures better flow of communication. स्टूडेंट्स, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स है वो ऑर्गेनाइजेस प्रॉपरली ऑल द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस के जितने भी ऑपरेशंस जितने भी एक्टिविटीज़ इनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करता है एंड एंश्योर्स करता है कि फ्लो ऑफ कम्युनिकेशंस यानी कि जो भी कम्युनिकेशन है उसको प्रॉपर वे में फ्लो किया गया है. सेकेंड पॉइंट, a clear structure makes it easy to check the responsibility of each part of business means every workers of business. स्टूडेंट्स, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो चेक कर लेता है, इजीली चेक करने में हेल्प करता है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एम्प्लॉयज़ एंड ईच आपका वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अलाउज कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन among human, physical and financial resources. Student, as you know, in a business there are various resources are available uh, which are helpful to produce the any goods and services, just like human being, physicals, machineries and financial resources just like funds, money, etc. तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है ये परमिट करता है यानी कि अलाउस करता है को रिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है अमंग ह्यूमन यानी कि एम्प्लॉयज़, फिजिकल मीन्स मशीनरी एंड फाइनेंशियल रिसोर्स मीन्स जो फंड से रिलेटेड है इनमें कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स क्लियरली डिफाइंस द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड स्पान ऑफ कंट्रोल अंडर ईच लेवल. स्टूडेंट्स, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स है वो क्लियरली डिफाइंस करता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड स्पान ऑफ कंट्रोल अंडर ईच लेवल मीन्स कि अंडर वन मैनेजर हाउ मैनी एम्प्लॉयज आर वर्किंग, क्लियर, एंड ईच एंड एवरी पीपल होल्ड एट विच लेवल ऑफ डेजिग्नेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. इट्स क्लियर. Now next topic is types of organizational structures. But student, there are two types of organizational structures. First is functional structures, second is divisional structures. Now discuss functional structures. When the activities or jobs are grouped keeping in the mind the functions or jobs, then it is called functional structures. Students, when jobs or activities are grouped according to the आपका functions of the job, functions of the activities, then this process is known as functional structures. For example, all the jobs related to the production are grouped in production departments.
Students, when we grouped all the jobs regarding to production departments, then this process is known as functional uh, structures. Second example, all the jobs related to sales are grouped under in sales department, etc. Means when activities are grouped under आपका on the base of functions only, then it is called functional structures. The production department can be further classified into store department, quality control department, assembly department, etc. Each department, a chain of superior and subordinates, is created to work systematically. स्टूडेंट्स के जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है उसको आगे फर्दर क्लासिफाइड किया गया है आपका स्टोर डिपार्टमेंट्स, quality control departments, assembly department, etc. So many departments are running under आपका production departments, and each department a chain of superior and subordinates. प्रत्येक जो डिपार्टमेंट है वो एक चेन है superiors and subordinates की, means कि who is the superior pupil and who is the आपका subordinates is created to work systematically, जिसके अकॉर्डिंग जो ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट का वर्क है वो सिस्टमेटिकली रनिंग होता है. नाउ डिस्कस द डायग्राम ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर्स. स्टूडेंट्स सी क्लियरली. फर्स्ट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन मैनेजिंग डायरेक्टर्स, देन these are divided into आपका according to departments. First is production department, marketing department, finance department and purchase department, etc. Now in production department the activities are performing processing, quality control and repair maintenance. Under marketing, advertising, sales, research, customer services. Under finance department, capital structures and finance planning. Purchase department, purchase of raw materials, record of purchase, etc. So this is the diagram of functional structures. Next topic is advantages of functional structures. First is occupational specialization. Functional structures promotes efficiency in utilization of manpower by performing similar jobs again and again. Result is improved performance and employees become specialized in their work. Students listen carefully कि जो फंक्शनल स्ट्रक्चर्स है वो प्रमोट्स करता है एफिशिएंसी को, इम्प्रूव्स करता है एफिशिएंसी इन यूटिलाइजिंग ऑफ मैन पावर की जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करने में बाय परफॉर्मिंग सिमिलर जॉब्स, बिकॉज एवरी एम्प्लॉयज़ repeat the same type of tasks in the organization, which result is improved performance of the employees and employees become specialist in their work. It is clear, students, कि when any people perform same type of work again and again, then this repetition of work leads to him toward the आपका specialization and he become perfect and specialized in their work. Second is promotes control and coordination within department. Students, there is a very easy supervision and better control in functional structure because similar jobs are grouped in one department. Similar types of jobs are grouped in one department. Student, in functional structures it is very easy to supervise and better control. मतलब उनको सुपरविजन करना और कंट्रोलिंग करना ऑफ द एक्टिविटीज़ को, that is very easy because similar types of jobs are grouped in one department. Only one types की jobs को ही, one types की activities को ही आपको controlling and supervise किया करना होता है. So it is very easy. Now next point is
increases managerial and operational efficiency. Managers of one department are performing same type of functions, same type of activities, same type of work again and again, which makes them specialized and improve their managerial efficiency. Students, जो वन डिपार्टमेंट का जो मैनेजर्स है, सपोज डेट ए मैनेजर ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो देन ही परफॉर्मिंग द सेम टाइप ऑफ वर्क again and again, again and again. So this repetition of work makes him specialized and improve their managerial efficiency. It's clear. Now next is minimize cost. Functional structures leads to minimum duplication of efforts, which result in economies of scale and thus lower cost. As you know, students, in organizing functions, all the activities, all the आपका duties are assigned to the employees. Clear? So there is no chance of duplication of work in the organization. When the duties are assigned to a particular work, then no chance of duplication of work in the organization. So functional structures leads to minimum duplication of work, of efforts, है ना, minimum डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स को लीड्स करता है, यानी कि नो चांस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन. रिजल्ट इज इन इकोनॉमीज ऑफ स्केल. मीन्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब जो भी आपका प्रोड्यूस होगा गुड्स, वो आपका मिनिमाइज कॉस्ट पर होगा एंड द कॉस्ट ऑफ डेट गुड्स विल बी लो. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड. All the persons working within a department are specialists of their respective jobs. Students, जो भी वर्कर्स हैं अपने डिपार्टमेंट्स में, वो स्पेशलिस्ट हो जाते हैं या स्पेशलिस्ट होते हैं ऑफ देयर रेस्पेक्टिव जॉब्स, अपने जॉब्स के रिगार्डिंग. तो इट मेक्स द कोऑर्डिनेशन इजीली एट डिपार्टमेंटल लेवल. तो इससे जो है डिपार्टमेंटल लेवल पर कोऑर्डिनेशन क्रिएट करने में ईजी होती है, आसानी होती है. Easy and effective training. The training focuses only in limited skills or one functions only. Students, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है ऑफ एम्प्लॉयज़ को, तो ओनली वन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ आर गेटिंग ए लिमिटेड एरिया आर लर्न ए आपका लिमिट स्किल. ठीक है, जस्ट लाइक ए फॉर एग्जांपल कि सपोज डेट we have to provide the training of production department, then we have taught them, we have कह लीजिएगा टीच देम कि हाउ टू प्रोडक्ट द आपका गुड्स, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड एट मिनिमम कॉस्ट. तो इन दिस वे only a limited skills the training are provide and only a one type of jobs the training are provide. So it is very easy to provide training in effective way.